Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Hopefully you are well and doing well. This is me, Mr. Daulat Khan, your mathematical modeling instructor. Today we discuss lecture number 14, which covers the week number 14 course. And the topic is how to mathematically model a wave equation and then solution of a wave equation. Before start to lecture, as usual, if you have any problem regarding this lecture, you can feel free to contact us on our Zoom ID and on email ID or on WhatsApp group. So let's begin the topic. Wave equation. Okay. Basically, wave equation is a mathematical equation which show the mathematical modeling of wave phenomena. Okay, so that we say that wave equation. So this equation represent the mathematical form of a wave phenomena. Okay, for this one we suppose let us consider a string that has mass per unit length is mu. It means density. Okay, density is mass per unit length. Okay, and we call them here mu. Some other call them denoted by rho. Okay, so this is maybe mu or rho, both are right. Okay, it is stretched by a tension T, which is much larger than the weight of the string, and its equilibrium position is along the x-axis. Okay, like this one. Look at this one. This one is stretched by some tension. Okay, maybe this tension is from upward direction or in this direction or in this direction and so on. Okay, so this is the y-axis and this is the x-axis, and this is the representation of a wave. This is a strength. Okay, and if we left it freely to it it behave like a wave. Okay, so that we said say that this to construct a wave equation from a string. Okay, so this is the length of the string, which is denoted by L, and this is the equilibrium position, which is the direction of the equilibrium position is along x-axis. Okay, and we consider a small part. Okay, we have a small component of this one, like this portion. We take this portion and zoom it, and we say that this is the dm, and dm means the small mass. This is a small portion of a string, so we call the mass of this string is denoted by dm. Dm denote the small mass. Okay, so and this dx denoted the length the length of this small portion, and the length is very small, so we denote it by dx, and the one tension is here and the other tension is here. These two tension are stretched the given string. Okay, and this one theta 1, and this is the theta 2, which is a theta between the a straight between the vertical position to tension. Okay, this diagram shows a short section of the string stretched in the x direction. Okay, this is the stretch in x direction, and the force is acting on it. Okay, our analysis only applies for small deformation, for which the string is a linear medium. That we consider a small deformation. We consider a small portion of a string, so it behave like a linear medium, and we neglect the gravitational force on the string.
which is in any case is a constant. In this portion we neglect the gravitational force. Okay. One's consequence of this restriction that we already mentioned above to small deformation is that the angle theta between the string and the axle, okay, direction is much smaller than 1. In the x direction is much smaller in 1. Look at this theta 2 and this theta 1. This is ये आपको बड़ा इसलिए नज़र आ रहा है. Maybe you say that sir this is greater than 1. Okay, you are right for this position, but this is the zoom of a small portion. Okay, ये हमने zoom up किया हुआ है, so इसलिए आपको ये बड़ा नज़र आ रहा है. But this is a small portion, so that we say that this angle is less than from 1. Okay, so as we they say that this is much smaller than 1 and much smaller than 1. This is a small which is greater than from 0, but much smaller than 1. So in this case the sine theta will be approximately equal to theta, and the cos theta will be approximately equal to 1. Okay, on old diagram, however, the deformation has been exaggerated it for clarity, zoomed for clarity. That we in our diagram basically we zoomed over the small portion, that for the clarity, to show clarity. Okay, so it also follow that the length of the segment show is dx. Look at ये जो मैंने बात की थी कि dx था, dx what is? This is the length of the segment, and the length of the segment is denoted by dx, mean that the length is much smaller. Okay, this is a small length. Let's apply Newton's second law in the vertical direction. Okay, we apply the Newton's second law in vertical direction, that is Fy is equal to MAy. F is equal to MA. The sum of forces, and this F basically here denoted the sum of forces, but we apply in y direction, so the sum of forces in the y direction is, there are two forces, the tension, this one, and this one, T sine theta 2 and T sine theta 1. Okay, and the one have direction, if we look this one, इसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है. सो दैट्स वी से दैट, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी है, सो इसलिए हमने थीटा 2 को जो है ना वो माइनस थीटा 1 लिखा है. लुक एट दिस वन, दिस इज थीटा 2. अगर आप इसको तो देख ले तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर आप इसकी देख ले तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. इफ़ वी क्या कहते हैं इसको, कि हम अगर इसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर लें, सो दैट वी से दैट द टी साइन थीटा 2 माइनस टी theta sine theta 1. Okay, here. Okay, now this is the sum of the forces in y direction. Using the small angle approximation, as we have a small angle, so sine theta is approximately tangent theta, and the tangent theta is equal to partial y by partial x. ये sin theta जो है ना वो अगर आप small ले लें, it mean this is much smaller. So in this case the value of sin theta will be approximately equal to, this is not exactly equal to, but approximately equal to the tangent theta. And tangent theta is basically in partial differential equation or ordinary differential equation we denoted by dy by dx, and here we use partial sign because y is basically the function of two variables, that is x and t, so that we call them partial y by partial x. Okay, so then we put this in this one, so fy is equal to t partial y by partial x, and this 2 is basically and
this 2 is denoted that this deformation is in this position. Okay, I will show you in this position. This 2 mean in this position. This is x2 second position, and this is x1 first position. So this 2 is represent the deformation is in second position, and this show the deformation in first position. आप कहेंगे सर ये तो कैंसिल होता है, बट कैंसिल हम इसलिए नहीं कर सकते. दिस इज इन सेकंड पोजीशन एंड दिस इज इन फर्स्ट पोजीशन. ओके, एंड वी कॉल देम दिस इज इक्वेशन 1. So the total force depend on the difference in slope between the two ends. And that's good. तो ये बेसिकली डिफॉर्मेशन जो सम ऑफ फोर्सेस हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं the deformation in slope and the difference between them in two position, that is position 2 and position 1. If the string if the string were straight, no matter what its slope, the two forces would add up to 0. Now let's get equal quantitative. The mass per unit length is mu, so its mass will be equal to what? The mass per unit length is equal to mu. तो यहाँ से आप मास को फाइंड आउट कर ले, विच इज इक्वल टू म्यू डी एक्स. ओके, दिस इज मास. नाउ वी हैव एफ इज इक्वल टू एम ए. तो अब इस मास की जगह पर आपने म्यू डी एक्स पुट करना है, एंड ए इज एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज बेसिकली द डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर. तो यहाँ पर भी मैंने डी स्क्वेयर लिखा है, बट दिस इज पार्शल. ओके, दिस इज partial y by partial t square, partial square y by partial t square, because y is a function of x and t, so that we use the partial derivative. Okay, so m की जगह हमारे पास आ गया. okay, ये m basically dm है, because we take a small portion of string, so the mass will be dm. That is mean a small mass. सो यह हमें नहीं लिखा, बट दिस इज डी एम, और डी एम की ये फुल वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर ली. म्यू डी एक्स पार्शल स्क्वेयर वाई बाई पार्शल टी स्क्वेयर. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन 1, वी गेट दिस वन. म्यू डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू टी पार्शल वाई बाई पार्शल एक्स in second position, and with negative sign, t of partial y or partial x in the first position. okay, ये दो चीज़ें भी साइड पर शिफ्ट कर ले. सो ये आ जाएगा t टेंशन डिवाइड बाय म्यू, एंड डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और ये होल आपके पास इक्वल है द पार्शल स्क्वेयर y बाय पार्शल x स्क्वेयर. ओके, अगर इस पे दिस इज द डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव. अगर हमारे पास दो x माइनस डेल एक्स एंड डिवाइड बाई डी एक्स, और हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास लिमिट्स लेते हैं तो वो हमारे पास डेरिवेटिव की इक्वल आता है. तो ये यहाँ पर मैंने वो चीज़ डायरेक्टली अप्लाई की है. सो दैट्स वी रोट हेयर पार्शल स्क्वेयर वाई बाई पार्शल एक्स स्क्वेयर, बिकॉज ऑलरेडी जो एक तो है पार्शल वाई बाई पार्शल एक्स है, तो एक डेरिवेटिव और भी आ गया, तो इट्स बिकेम पार्शल स्क्वेयर वाई बाई पार्शल एक्स स्क्वेयर, और ये एज इट इज. ओके, नाउ दिस इज द वेव इक्वेशन. okay, this is the wave equation in one dimension, but look at tension by mu, that is density. So this is a constant, and we call them c square. We denote this constant by c square. okay, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज constant हैं, और हम सॉरी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, बिकॉज टेंशन नेगेटिव हो सकता है बट डेंसिटी नॉट नेगेटिव. टेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड डेंसिटी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. सो वी मेक देम पॉजिटिव. सो फॉर द पॉजिटिविटी we say that this is equal to c square, and where c square is any constant. okay, this is just labeling of the constant of t by u square. Now this is the general form of the wave equation. This is the wave equation in one dimension. In two dimension and three dimension we have also.
okay, but we are restricted here in for one dimension. So ये आपके पास मैथमेटिकल मॉडलिंग थी वेव इक्वेशन की. नाउ लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन. Okay, so now dear student, let's begin the solution of for our 1D wave equation. Okay, the wave equation which physically bound with physically boundary condition. Okay, now this is the wave partial square y by partial t square equal to c square partial square y by partial x square with initial boundary condition. ये तो wave equation है, but what is mean by this initial and boundary condition? This is the initial and boundary condition. Look at the first initial condition tell us that y0 t, it's mean initially at this position. Look at x is equal to 0, the value equal to 0, and ylt mean that at the end, look at this is the length of the wire. So x is equal to L mean at this position. So basically these are the two ends of a string which is equal to 0 mean that the two string are connected with x-axis with a fixed point that is initially 0. Okay, and yx equal to 0 mean at time equal to 0. हमने यहाँ से इसको खींचा, यहाँ इस पोजीशन पर इसको लेके आए हैं. ओके, इस पोजीशन पे हम इसको लेके आए हैं और यहाँ से इसको हमने छोड़ना है. बट here time is 0. ओके, इनिशियली टाइम. और ये हम थ्रू किस वैल्यू हम छोड़ेंगे? With f of x, and f of x mean the function of x which depend on x. Okay, मैंने आपको जो असाइनमेंट देंगे उसमें मैं यहाँ पर कोई और कंडीशन लिखूँगा, लाइक साइन x, cos x, एक्सपोनेंशियल e power x, or maybe this is equal to 1. 1 mean with constant 1, and sine mean with sine oscillation, cos mean with cos oscillation, and exponential mean with exponential oscillation. So हम इसको यहाँ पर छोड़ लेते. तो it start oscillating and it should behave like a wave. And initially the velocity of the string is 0. So these are the boundary condition that initially the velocity of the string is equal to 0. So let's begin with this assumption. ये आपके पास initial boundary condition हो गई. So ये आपके पास wave equation है. So let's begin with this assumption. What will be the solution of this one? Okay, so by using separation of variable method, we use a separation of variable method. For this one, we suppose this is the equation 1, which is a wave equation. Let the complete solution of wave equation in the form of this: y x of t is equal to t of t and x of t. T of t mean that this is the function of t, and x of x mean this is a function of x. So definitely यहाँ पर क्या है, partial t है और यहाँ पर partial x है. So if we find the solution, if you find the value of y, which is basically the wave, okay, which is basically denote the point of wave, the point of a string at x and with respect to time. Okay, so वो डिपेंड करेगा टाइम और x पे. So that we denote this y x of t is equal to t of t and x of x, and we call them equation number 2. Okay, अच्छा, फिर इस इक्वेशन का आप 2 टाइम with respect to x derivative ले लें. So we get partial square y by partial x square. So ये as it is आ जाएगा because this is a function of t
और इसका 2 टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। ये फंक्शन है, ओके, दिस इज़ नॉट एक्स। आप कहेंगे सर ये तो एक्स है, एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो constant आता है, but this is not x, this is a function of x, so that we write double x and double x double dash, and x double dash mean partial or partial x of x, या यहाँ पर आप d by dx भी लिख सकते हैं, यहाँ d by dx भी लिख सकते हैं, because this is just the function of x, so हम d by dx भी लिख सकते हैं. And similarly, if we take the partial derivative of y with respect to t 2 time, we get t double dash of x, because x पे कोई फर्क नहीं आएगा, x is a function of x and t पे आप 2 time derivative लेंगे, so it give us double dash, okay, the double derivative of t. Okay, now put these value in equation number 1, we get like this one. T double dash x is equal to c square t x double dash. Okay, now t और c square को इस साइड पर शिफ्ट किया, इस x को इस साइड पर शिफ्ट किया by variable separation. But now look at this one. Why we put this is equal to k? This is very interesting. Look at this side. This side is a function of t and this side is a function of x, because this x, the double derivative of x is also a function of x, and the x is also a function of x, and here the total term is a function of t. So this is not possible that the function of t is equal to the function of x. So remove this difficulty, or remove this contrary, we put these two are equal to k. ये दोनों constant, ये दोनों equation k के equal है. So now in this case it is right, okay, फिर ये t बन जाता है, so that we write equal to k. Okay, now if two equation equal to k, so we can say that the first equation is equal to k and the second one is equal to k, और यहाँ से आ जाएगा t double dash c square t k, and यहाँ से आ जाएगा x double dash equal to x k, and इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा equation 3 और ये equation number 4. Okay, now we have here three cases arrives for the value of k. या तो हमने k पुट कर लिया, but now we have three cases for the value of k, that is if k is equal to 0, if k is equal to greater than 0, positive, and if k is less than negative 0, that is negative. So let's begin with the first case, the case 1, when k is equal to 0. If we put k is equal to 0, then we have the equation 3 and 4 like this one, t double dash 0, and the second one is x double dash 0. So t double dash 0 आपके पास आ गया, तो अब इसको सॉल्व कर ले, which is very easy. Taking integral integrating both side we get, इसका जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये t dash आ जाएगा, और 0 का इंटीग्रल आप लेंगे तो कांस्टेंट आएगा, and we call them this c1. Again integrating we get, इससे आ जाएगा t of t, और इससे आ जाएगा c1 of t plus c2. Okay, and similarly x double dash is equal to 0. By integrating both sides we get x dash of c3, already हम c1 यूज़ कर चुके हैं 2. अगेन इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर इसका हम डेरिवेटिव लें, इंटीग्रेशन ले लें, तो ये x ऑफ x आ जाएगा, और ये c3x प्लस c4. यहाँ पर देखो x आ गया और इससे पहले वाले में t आ गया, बिकॉज दिस x इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड t इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो ये अपने याद रखना है. So hence the complete solution, we already mentioned that, look at here, this is the solution, okay, we call them, this is the solution of the given equation. So we just need to find t of t and x of x, and then put the values of t and x of x here. So as we here we get the value of t, which is this one, and the value of x of x on this one. So put in equation 2 we get the complete solution in the form of this: y of x of t is equal to c1 t plus c2 into c3 x plus c4, and we call them equation number 4. Okay, in this case look at this is the just a linear function.
दिस इज जस्ट अ लीनियर फंक्शन. सो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ यू बन जाएगा. मैं यहाँ पर आपको शो कर लेता हूँ. या मे बी लाइक दिस वन, मे बी लाइक दिस वन, मे बी लाइक स्ट्रेट लाइन एंड जस्ट एक लाइन सा बनेगा. ओके. So, okay, now in second case, when k is positive, in k is positive means k is greater than 0. So for the positive we take p square. हम k को p square लेते हैं क्योंकि where p is any number, maybe negative means positive. So अगर negative positive आप दोनों लेते हैं तो definitely वो negativity को ख़त्म करने के लिए we take square. So that we say that k is equal to p square. So we have from equation 3 and 4. Equation 3 और 4 में k की value p square put करेंगे. So we get t square, sorry, t double dash minus p square c square t and x double dash minus p square x. Okay. And now this is the second order differential equation. So how to solve this is this second order differential equation? Yeah, by taking its auxiliary equation. So its auxiliary equation are, the auxiliary equation of this one is equal to m square minus p square c square, and the auxiliary equation of this equation will be m dash square minus p square. M dash just to differentiate this m and this m. Okay, this not represent partial m or partial x or partial m or partial t. Yeah, you can also write m1. So for the differentiate from this one. So इस वैल्यू को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे m square c square पॉजिटिव साइन के साथ. And if we take the integration on both sides, we get the value of m is equal to plus minus pc. Okay, now both are real value. So the solution will be t of t is equal to c1 e power pct plus c2 e power minus pct. Okay, दो roots आ गए. And similarly here m dash square is equal to p square, and if we take under root on both sides we get m dash is equal to plus minus p. So the solution will be x of x is equal to c3 e power px plus c4 e power minus px. यहाँ पर देखो x लिख रहे हैं, यहाँ t लिख रहे हैं. So definitely ये this is a function of x and this is a function of t. So dear student, now in this case the value of t is equal to this one and the value of x is equal to this one. Now put these two values in equation number 2, hence the complete solution will be like this one. This is the value of t and this is the value of x. Now look at this is an exponential function. Okay, so इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ यूँ आएगा. और two possibilities, मे बी या इस तरह आ जाए, बढ़ रहा है, मे बी इस तरह आ जाए, घट रहा है. सी ना, खत्म. Okay, so these two possibilities for this case. Okay, and we call them this is equation number 6. Okay, now the third one case when k is less than 0, it means k is a negative. So for negative we suppose k is equal to minus p square. Okay, where p is any number, so this minus p square basically represent the negative number. Okay, then from equation 3, then if you put k is equal to minus p square in equation 3 and 4, we have t double dash plus p square c square t and x double dash plus p square x equal to 0. Now this is again the second order partial differential equation, or this is the second order ordinary differential equation, because this is just only the function of t and this is just only the function of x. So this denote d square t divided by dt square. Okay, so how to solve this equation? By taking again the auxiliary equation. Okay, so इसके जो auxiliary equation है वो m square plus p square c square, and the auxiliary equation of this equation will be m dash square plus p square equal to 0. और m dash में फिर यहाँ बता देता हूँ, this is just to differentiate with this m. Okay, you can also take m1 या ma या m0, and this is your choice. This is just label.
ओके, सो इस टर्म को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 का अंडर रूट आयोटा और पी सी आ जाएगा. नाउ दिस इज imaginary roots, and similarly like this in this case माइनस पी स्क्वायर को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर एंड टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट प्लस माइनस iota p. So as you are familiar in ordinary differential equation कि हम अगर इस तरह आ जाए हमारे पास तो हमने क्या करना है, just write c1 cos pct plus c2 sin pct and here c3 cos px plus c4 sin px. Now this is the value of t and this is the value of x, hence the complete solution. Put these values in equation 2, we get the complete solution in the form of this one. Okay, now this is the interesting solution because इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ यूँ आ जाएगा. Look it. Here graph will be like this one, like this one. So definitely अगर हम इस ग्राफ को गौर से देखें तो ये बेसिकली एक वेव्स की शक्ल में आ रहा है, सही है ना. ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक वेव की शक्ल में. मे बी द सेकंड पॉसिबिलिटी इज हेयर कि इस तरह भी आ सकता है. ओके, सो इन बोथ पॉसिबिलिटीज इट शोज द ग्राफ लाइक अ वेव. सो हम क्या करते हैं, वो पहले दो सोल्यूशन जो हमारे पास आए हैं उसको इग्नोर करते हैं एंड वी टेक दिस सोल्यूशन. Okay, since periodic function are present in 11, which is sine and cos, and it shows the physical nature of wave, so equation 11 is the only solution. No, this is 7, so यहाँ पे मैंने 11 लिखा है. This is equation 7, इसको आप सही कर ले या चलो बस आप इसको सही नहीं करें, इसको ही 11 कहें, चलो इसको ही 11 का है. ये आपके पास चूँकि शो करता है, इसमें पीरियोडिक फंक्शन है, सो ये बेसिकली नेचर शो करता है द वेव का. ओके, सो इक्वेशन 11 इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन 11. ओके, एंड वी इग्नोर द अदर टू आर इग्नोर्ड. नाउ we find the value of c1, c2, c3 and c4 to put the initial and boundary condition. Okay, first of all we put the initial condition, that is y0 t equal to 0, hence x of x equal to 0. तो अगर हम इसमें x को 0 पुट कर ले तो ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर आप x 0 पुट करेंगे तो ये cos 0, ये sin 0. sin 0 0 आता है तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, एंड cos 0 1 की इक्वल है तो ये c3 आ जाएगा. तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिखा है c3 plus 0. ओके, सो डियर स्टूडेंट, c3 मल्टीप्लाई विद दिस वन, ये एज इट इज आ जाएगा बिकॉज देयर इज नो x टर्म, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी. ओके, नाउ लुक इट, दिस इज द टू टर्म and which we multiply it give us 0. ये दो टर्म है जिसकी मल्टीप्लिकेशन 0 आता है, तो डेफिनेटली दिस टर्म कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज दे हैव सम कॉज एंड साइन वैल्यू. सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज टू टेक c3 इक्वल टू 0. ओके, सो दैट वी से दैट दिस c3 इज इक्वल टू 0. हेंस इक्वेशन 11 बिकम, अगर हम इस c3 को 0 पुट कर ले तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन 11 इस तरह बन जाएगा like this one. Y of xt is equal to c4 sin px c1 cos pct plus c2 sin pct, and we call them 11a equation. Okay, now put the next initial condition, which is u of L of t equal to 0. तो x की जगह बेसिकली क्या पुट करना है, L. तो इस इक्वेशन में जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप L पुट कर ले. तो ये लुक एट दिस वन, u ऑफ L ऑफ t sin p L, और ये एज इट इज आ जाएगा बिकॉज देयर इज नो x टर्म. ओके, नाउ ये तीन टर्म है c4, दिस वन एंड दिस वन, एंड इट इज़ इक्वल टू 0. तो डेफिनेटली ये इसके बारे में
ये ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर इसको ज़ीरो कर लेंगे तो फिर तो टोटल इक्वेशन ही ज़ीरो हो जाएगा। और C4 के बारे में भी कंफर्म नहीं है कि आइदर दिस वन इज़ ज़ीरो और नॉट, और अगर इसको भी ज़ीरो कर लिया जाए तो डेफिनेटली ये भी टोटल ज़ीरो हो जाएगा। द ओनली पॉसिबिलिटी इज़ लेफ्ट दैट इज़ साइन PL शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो साइन PL इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ से PL फाइंड करना है तो PL ये साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो कब देंगे, n पाई पर, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू so on। सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी n पाई फॉर जर्नल सोल्यूशन। ओके, एज वी टेक जर्नल सोल्यूशन। और अगर आप सिंपल पाई भी लिख लें तो वो भी सही है, लेकिन पाई इज जस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉर वन पीरियड, ओके, एंड द पाई इज फॉर द होल फिनोमेना। सो डियर स्टूडेंट, ये n पाई आ जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू हम फाइंड l की वैल्यू हम फाइंड करेंगे विच इज़ n पाई डिवाइड बाई p। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 11a। सो वी गेट लाइक दिस वन, C4 sin n पाई x डिवाइड बाई l, C1 ये p की वैल्यू हमने पुट कर ली, और यहाँ l की वैल्यू, p की नहीं, ये हमने क्या की p की वैल्यू, या दिस इज द वैल्यू ऑफ p, दिस इज नॉट l। यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड की है, नॉट लेंथ, बिकॉज p इज कांस्टेंट। ओके, तो ये आपके पास l आ जाएगा, तो इसकी करेक्शन भी कर लें, और यहाँ पर भी आपके पास l ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और फिर ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एज इट इज़। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने एक काम किया है, इस C4 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, C4 विथ C1 एंड C4 विथ C3 लाइक दिस वन, और ये भी L है, इस सबको L कर ले आप। ओके, सो ओके डियर स्टूडेंट, C1 C4 is again constant, so we call them A, and C3 C4 is again constant, so we call them B। ओके, इसको हमने B का नाम दे दिया। ओके डियर स्टूडेंट, एंड इस इक्वेशन को हमने पूरा नाम 11p दे दिया। नाउ पुट द बाउंड्री कंडीशन दैट इज पार्शियल u बाय पार्शियल t 0। ओके, तो इस कंडीशन को पुट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ दिस इक्वेशन 11b। सो लेट्स बिगिन विद द टेक डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्टली लिया हुआ है लाइक दिस वन। So taking the partial derivative of equation b, we get the partial y by partial t। Sin का derivative नहीं ले सकते because this is a function of x, so no need to find the derivative, okay, but this is the product with this, so we take common। अब इसका derivative लेंगे, so cos का derivative sin आता है, और इसके angle का again derivative लेंगे with respect to t, so we get n pi c divided by l। And similarly the derivative of sine is equal to cos, so b cos of this one, and again the derivative of angle we get this। Now put t equal to 0। okay, now put t equal to 0 we get। okay, so हमने 0 पुट कर लिया यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा टोटल टर्म, और ये भी 0 आ जाएगा लाइक दिस वन, माइनस a sin 0 एंड b cos 0, और ये बाकी टर्म एज इट इज। ओके, सो डियर स्टूडेंट, साइन 0 इक्वल टू 0, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, और ये cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 b, और ये अपनी जगह पर। ओके, नाउ b इंटू, और इसकी जो वैल्यू है वो भी 0 है लाइक दिस वन। ओके, पार्शियल u बाई पार्शियल, एंड दिस इज नॉट u, दिस इज y, दिस इज y, पार्शियल y। ओके, सो पार्शियल y बाई पार्शियल t इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 80। तो इसकी जगह हमने यहाँ पर 0 पुट कर लिया। ओके, सो नाउ b मल्टीप्लाई दिस टर्म, सो ये आपके पास 0 नहीं हो सकती बिकॉज दे हैव सम वैल्यू। ओके, सो हम क्या करते हैं, डेफिनेटली b को ही हम कंसिडर करते हैं 0, सो हेंस b इक्वल टू 0। नाउ पुट दिस b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 11b। वेयर इज 11b? हेयर। सो अगर हम b को 0 पुट कर लेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, एंड वी गेट जस्ट दिस टर्म लाइक दिस वन, like this one, yx of t is equal to sin n pi x divided by l, a cos n pi c t divided by l plus 0। ओके, ये b 0 से वो टोटल टर्म 0 हो जाएंगे, ये सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी कॉल देम 11c। नाउ द
put this condition, which is y x of 0 f of x. ओके सो इट इज इक्वल टू 0. यहाँ पर आप t 0 पुट कर लेंगे इन 11c, सो यू गेट लाइक दिस वन, y x ऑफ 0 a साइन ये एज इट इज एंड cos 0, बिकॉज यहाँ पर t है तो t 0 ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा cos 0. सो cos 0 मीन 1. ओके सो 1 यहाँ आ जाएगा a साइन एंड दिस वन, और द वैल्यू ऑफ a विल बिकम f ऑफ x डिवाइड बाय, इसको इस साइड पर शिफ्ट करिए, डिवीजन में आएगा. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन हेयर, वेयर इन इक्वेशन नंबर 11c. सो इक्वेशन 11c विल बिकम लाइक दिस वन, y x ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ x, और ये पूरा a की वैल्यू पुट कर ली, ये एज इट इज और ये एज इट इज, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट y x ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ x cos and pi ct l. Now this is the solution of the general solution of a wave equation. Okay, so dear student, अब इसमें कुछ बातें डिस्कस करने की है कि c तो कांस्टेंट है, तो सम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी and we have L. Length is basically the length of the string. So maybe it 1, it 2, so you can take. Okay, but this is the general solution. ये हमने उस wave equation को generally solve किया है, so that we get a general solution. Okay, और ये आप लोगों का assignment है, and what is the different in assignment, that is just the boundary condition. Boundary condition क्या है, sin x, that initially the string is a oscillate with a sine. Okay, oscillate with a sine oscillation. So best of luck for your assignment. Okay, so it is enough for today, dear student.